So let's start with power. Power of a force. Okay. Power of a force. Shocking is not here. सर अब 3 रन से फिर आप टीम देने वाले थे आपने थप्पड़ So power. Actually, we want to do power of a force. Whenever there is a force, so force is going to exert some power, and we are discussing that power in today's class. Okay, very small segment it is. So what is power? Power is rate of doing work. Okay, rate of doing work. Your name again, dear? Kajal. What do we mean by rate? with respect to time. Rate With respect to time. with respect to time. Divided by time. Yes. Or in short, right, divided by time. In physics, rate means divided by time. So rate of doing work means work upon time. Okay, so work upon time is power. So power of a force is work upon time. Fine. Note down this much. Now, power can be of two types. Okay, there are two types of power. Number one is instantaneous, number two is average. And this is average. As the name suggests, instantaneous. Instantaneous means at that particular instant, at that particular time. Okay, that is instantaneous power. Okay. And average power, so for a particular or whole period of time, whatever the power is, that is average power. So write down an instantaneous power. Write down the definition first. Put on the heading instantaneous power and write the rate of doing work. The rate of doing work by a force. The rate of doing work by a force at a given instant is called instantaneous power. Rate of doing work by a force at a given instant is called instantaneous power. Okay. Instantaneous power. Power is represented by P. I told you rate of doing work at a particular instant. Okay. So whenever we are talking about a particular instant, how do we represent it in physics? dt. In differential form. So dw by dt. You know differential, na, Kajan? Differentiation. D is the representation of delta. Delta means change, and change means final minus initial. Okay. So dw by dt is change in work divided by change in time. What is work? Formula for work? dw. force into displacement. Since dw is written here, so a small amount of work is done, right? If a small amount of work is done, then displacement will be small. So F dot dr, where r is the displacement, it is representing the position, right? By dt, yeah, dr by dt,
displacement upon time, it is velocity. Yes, sir. So power instantaneous is equal to force into velocity. Both are the vectors dot product. Okay, so it can also be written as Fv cos theta if you talk about the magnitude of the power. Getting it or not, everyone? Yes, sir. Oh my God, where were you shopping? I was missing you. Every सर child, मैं सिर्फ ज्वाइन कर रहा सर पे मेरे को मीटिंग से निकाल देते every student is shocking. अच्छा हाँ थैंक यू सर What you didn't realize that today is children day or that now you are not a child? What was the realization? सर स्कूल नहीं जाते तो याद ही नहीं रहा हमने वहाँ फॉर्मूला में cos थीटा की वैल्यू का Here, यहाँ पे मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा है, ठीक है? ये मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है। वो स्केलर ही क्वांटिटी, लेकिन मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में मैग्नीट्यूड लिखा है। यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड ही आएगा, पावर स्केलर है। स्केलर ऊपर और कहाँ? यहाँ पे cos थीटा यहाँ पे? अच्छा आरटी के पोजीशन Now the rest of the things of dot product they are very easy, you know. If angle between force and velocity will be 90 degree, then power will be 0. Acute angle होगा तो power positive होगी. So all these things you know. So I'm not going into that detail. Note it down. Correct? Next is average power. Kajal, are you understanding? समझ में आ रहा है? Yeah. जब थीटा की वैल्यू मान लो माइनस में जा रही है और पावर माइनस आ गया तो उसका मतलब क्या होता है? पावर माइनस आ गया, इसका मतलब फोर्स वर्क नहीं कर रही है। फोर्स बॉडी पे वर्क नहीं कर रही है, बॉडी ने फोर्स पर वर्क कर दिया, उस सिस्टम पे वर्क कर दिया। बॉडी फोर्स पे वर्क का मतलब ये है। Done? Yes, sir. Shireen and all. Yes, sir. Done. Okay. Yes, sir. Fine. Next is average power. Yes, sir. Madhu, this is your demo class, right dear? So if you face any problem or if you don't understand anything, please tell me. Huh? Average power. So write down average power is defined as total work done divided by total time. Total work done by a force divided by total time. Total work done by a force divided by total time. So P average will be work total divided by total time, capital T. Done? Yes, sir. We are doing power developed by a force. Okay. So Power. what did we do? We can take the notes from them. Okay, so now let's solve some questions. Question number 1. A ball of mass one kilogram is dropped from a tower
Find power of gravitational force so such questions you see in NEET examinations of power. At a time t equals to 2 seconds, take g equals to 10 meters per second square. Okay, because people mostly think that power is there in case of electricity. In mechanical physics, power is there that astounds the people. Good, good. Yes, what is the answer? 100? Yes, and they are getting 200. Sir, 200. Yeah. Everyone got 200. ओ हाँ सर हाँ 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 आ गया सर अरे कुछ भी नहीं कर रहे हो. अब आ गया वो थ्री करती सोच आ गया मैं गलत कर रहा हूँ क्यों इसमें क्या दिक्कत है? First find out velocity. Acceleration, you know g will be the acceleration. Time is given. Acceleration is equal to v upon t. So v is equal to acceleration into time. So g into t. G is acceleration due to gravity. V आ जाएगा. Now find out the force. Force is m into g. Weight is the force. Gravitational force बोल रखा है. So m into g will be the force. You got the force, you got the velocity, multiply them. You will get the power. See, it is asking a ball of mass from a tower, find the power and all that. So first of all, which power they are talking about? They are talking about instantaneous power. Yeah, good Reshma Shanmukha. Because they have mentioned a particular time at which you have to calculate the power. So power is equal to force dot velocity Fv cos theta. Fine. So if this is your mass, so this mass is going to fall down. This force will act on it. Which force acts on a mass which is falling down? Its weight acts. Yes or no? So force will be its weight, that is m into g. Yes. And velocity will also be in the same direction. So angle between them will be 0. When two bodies are moving parallelly or when two lines are parallel, angle between them is 0. So force and velocity are along the same direction. That means they are parallel. So angle between them is 0. Okay. Now we need to calculate velocity. It is not given to us, but g is given to us. G is acceleration. So acceleration is equal to velocity upon time. So velocity will be g into t. G is 10, time is 2. So 20 meters per second is your velocity. Fine. Yeah. Now force is m into g. What is the mass? Mass is 1 kilogram, g is 10. So 10 Newton is the force. So P instantaneous will be F into V, that is 10 into 20. 200 watt. Unit of power is watt. Okay, if you don't know, please write down. SI unit of power is watt. WATT.
named after a scientist, so it will always be in capital letters, block letters. What are you thinking, Nikita? मैंने जिस तरीके से किया था उससे गलत क्यों हो गया था? What you did? मैंने ऐसे कुछ भी यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से एस निकाला था और फिर S क्यों निकाला? स्टार्टिंग में एस मेरा ऊपर हो गया ऐसे डी एस बाई डी टी, तो मैंने गलत प्रकाश किया था। S is equal to UT, पर तुम्हें V कैसे पता चला? क्यों अगर वो ड्रॉप हो तो उसकी इनिशियल पे जीरो मेंशन नहीं है ना ये, हाँ ड्रॉप मेंशन है, लेकिन V कैसे पता? यू आता है ना, तो यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर UT प्लस हाफ एटी स्क्वायर से तुमने सिर्फ हाफ एटी स्क्वायर लगाया, हाफ GT स्क्वायर, टाइम आपने 2 सेकंड लिया, राइट? और आप V निकाल रहे हो जो पोजीशन नहीं का है, तो आप तो T इक्वल्स टू 2 रखोगे तो उस पर्टिकुलर सेकंड में वेलोसिटी आई ना। नहीं, मैं एस निकाल रही थी ना। S निकालोगे T की वैल्यू क्या रखोगे? हाफ GT स्क्वायर 2 रखोगे, तो सेकंड दूसरे सेकंड पर ही तो वेलोसिटी आप रख रहे हो, डिस्प्लेसमेंट दूसरे सेकंड की निकल के आएगी ना। हाँ, सही। आपने पूरी वेलोसिटी तो रखी नहीं, V एवरेज तो रखना नहीं है। मैंने जीरो रख दिया, हाँ। मैंने कहा डेटा इनसफिशिएंट ये मेथड लगाया। और इसमें जब हम v निकाल रहे हैं तो वो कौन सा यूज किया? हम यहाँ पे V निकाल रहे हैं तो हम उस पर्टिकुलर सेकंड का ही निकाल रहे हैं, क्योंकि हमसे पावर उस पर्टिकुलर सेकंड में पूछी हुई है। अच्छा, वो जो है, टू का निकाल रहे हैं। हाँ वो डिस्प्लेसमेंट निकाल रही थी उस पर्टिकुलर सेकंड का। और मैंने वेलोसिटी स्टार्टिंग की रखी। Okay, got it. Next question. Have you noted it? Everyone please note it. Done? Yes. Okay, next question. You dear. Madhu, are you getting it? So it is a particle of mass m is lying on a smooth horizontal table. A constant force F tangential to the surface is applied on it. So find number 1 average power over the time interval of t equals to 0 to t equals to t. Instantaneous power as a function of time, as a function of time t. Whenever we cannot calculate work, then we use work energy theorem. Whenever there is no option to calculate work,
we could not calculate the displacement or things are not provided, then use work energy theorem. Work done by all the forces is equal to change in kinetic energy. Initially block is at rest, so its kinetic energy will be 0. Then its final kinetic energy, let's say it is moving with some velocity v. Calculate the value of v. V is equal to A into T. A is equal to F upon M. Oh, very good, very good. F square 3 upon, yeah, good Shanmukha, very good. Good here. Sir, average power is S square D by 2n. Very And like instantaneous power is F into S square Yeah, good, D good, upon good, Shri. हाँ ठीक है. Reshma, very good. F square T upon 2n. Yeah, instantaneous is also right. Good. Shanmukha. Reshma, your instantaneous Yes. Oh, yeah, shocking. Instantaneous is F square D by L. Yeah, and average? I am not able to do that. Okay. Sir, it was Bhavika, Avni, sir, it was yeah. अगर मेरा आया नहीं पर ये ये दिक्कत है ये आपने ना वो फिर आप एमबी स्क्वायर लगाओगे हाँ v क्या हो जाएगा v हो सर जाएगा f स्क्वायर t by 2 है f स्क्वायर t by 2 या v हो जाएगा तुम्हारा f upon m हाँ into t ठीक है तो हाफ m into f upon t m का होल स्क्वायर ये काइनेटिक एनर्जी हो गई ना और इसको t से डिवाइड करोगी तब आएगा ना कुछ किया सर नहीं अभी कुछ नहीं कुछ तो करो हाथ पैर मारो प्रियंका गुड सो भी आ गया अब गुड ये पावर कैसे निकाल लोगी पावर निकालने के लिए तो फोर्स इनटू वेलोसिटी चाहिए ठीक है लेकिन जैसे तुम इंस्टेंटेनियस निकाल रही हो पहले तो एवरेज पूछ रहा है 0 से लेकर t तक तो वर्क एनर्जी थ्योरम निकालना लगाना पड़ेगा अब ये इंस्टेंटेनियस हो गया तुम्हारा इंस्टेंटेनियस सही आ गया एवरेज के लिए तो 0 से लेकर t तक देखना पड़ेगा ना ओके आई एम डूइंग so the question is here is a block it is lying on a horizontal surface and some tangential force is acting on it okay F okay fine so let the mass is given to us it is m we have to calculate instantaneous and average power so instantaneous you all can do it is very easy so let's first solve instantaneous के लिए क्या करेंगे instantaneous power is equal to force into velocity yes or no into cos theta so जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी एंगल विल अगेन बी 0 so fv cos 0 force is given to us it is f velocity we need to find velocity is equal to acceleration into time acceleration के लिए यहाँ पे g वगैरह तो कुछ लगेगा नहीं because body is moving
हॉरिजॉन्टली, इट इज नॉट मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स से वर्क नहीं निकाल रहे हैं, F से वर्क निकाल रहे हैं, तो G वाला सिस्टम नहीं लगेगा यहाँ पे। फिर क्या करें? We also know that force is equal to mass into acceleration. हाँ, so acceleration is equal to F upon m. बोलो बोलो। So v की जगह मैं F upon m रख सकता हूँ, F upon m into t। ये एक्सीलरेशन हो गया ना, so acceleration into time होता है v, velocity is a into t, ये आ गया आपका F upon m, टाइम आपको t दे रखा है, देखिए इंस्टेंट बोला है t पे निकालने के लिए, टाइम t दे रखा है, so F into F upon m into t into cos 0, cos 0 is 1, so this is F square t upon m, this is p instantaneous. Got it or not? Note it fast. गुड प्रियंका, ये कर लिया। एवरेज है FDT also। एवरेज इज डियर टोटल वर्क डन, यानी कि मुझे 0 से लेके t तक करना पड़ेगा। ओके, तो 0 पे कितनी क्या फोर्स लग रही है, उस टाइम पे क्या एक्सीलरेशन, वो सब देखना पड़ेगा, तो वो तो कुछ लग ही नहीं रहा है ना। तो बेस्ट तरीका ये वर्क एनर्जी थ्योरम निकाल लीजिए, क्योंकि हमें इतने सारे वेरिएबल्स दिए नहीं गए हैं कि हम पूरा 0 से लेके हर इंस्टेंट पे निकालते चले जाएं। सो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लीजिए। ओके, नोटेड। So let's move on. Now talking about average power. So T average was total work done upon total time. So 0 से लेके small t तक total time is t, right? So t से divide कर देंगे, total work done क्या होगा? अब we can't calculate work done on each and every second, हमें इतना data नहीं दे रखा है. So what is the way out? Apply the work energy theorem. Work done by all the forces is equal to change in kinetic energy. Force कौन सी है? F तो लग रही है, mg लग रहा है नीचे, लेकिन वो कोई वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन नहीं है। 90 हो जाएगा cos 90, remember? So this will be change in kinetic energy. Kinetic energy at t equals to 0 कितनी हो जाएगी? Kinetic energy का फॉर्मूला होता है half mv square. तो t equals to 0 पे फोर्स नहीं लग रहा है, बॉडी मूव नहीं कर रही, वेलोसिटी 0 है, so kinetic energy will also be 0. बोलो बोलो। अब t equals to t पे देखो, kinetic energy is half mv square, mass is given to us, velocity we need to find, velocity कैसे निकालें? acceleration into time, acceleration कितना है? f upon m, अभी निकाला था, acceleration is f upon m, so velocity is f upon m into t, yes or no? Yes, sir. whole square, ये kinetic energy हो गई, right? So 1 upon 2m into f upon m into t whole square upon total time t. इसको सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले तो देखिए m, ये 2 नीचे चला जाएगा, तो ये 2t हो गया, m बचा यहाँ पे, ये हो गया आपका f स्क्वायर t स्क्वायर m स्क्वायर, राइट? इस m से ये स्क्वायर जाएंगे तो होता है, सो इट इज f स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन 2mt, t से ये स्क्वायर चला गया, so f square t upon 2m, that's your average power. Got it?
अंडरस्टूड? Yes, sir. सो इस तरह के मैंने पता नहीं क्यों एक्सेलरेशन का एफर्ट की है। सो इस तरह के भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। ये भी एक सेट है, यू मस्ट नो। So one more question on it, and I want you all to do this. Then we will do law of conservation of mechanical energy, and this will be the end of work per energy. Today you will get an assignment on work per energy. हाँ तो कोई एक दिन रख लो जिसमें आप थोड़ा सा इंटीग्रेशन करा दो और डीपीपी के वो जिसमें हमारे कोई एक क्लास Okay, this week we will do it. इसके बाद क्या करेंगे सर? UCM, Uniform Circular Motion. इस वीक में कंप्लीट हो जाएगा UCM. And after UCM, from next week, we are going to start the wonderful journey of waves. Waves की कोई क्लास मिस मत करना, दवा खा के आ जाना, वरना वेव बहुत अच्छे से बाउंस होता है। एक महीने आपको बहुत अच्छी नींद आएगी फिर। Done? Okay, let's move ahead. Solve this question. Hello, ऐसा question. The question is, a time-varying power T is equal to 2T. Time varying means it is changing with time. Is applied on a particle of mass m. So find a kinetic energy and velocity of a particle as a function of time. The average power over a time interval from t equals to 0 to t equals to t. So kinetic energy 2m by x square. Kinetic energy is T square. सिर्फ T स्क्वायर। ऐसा बुक में लिखा है। Sir, velocity under root 2m by 2 by m. What? Velocity is what? Sir, kinetic energy t square आ रही है तो फिर velocity under root 2 by m t. But have you calculated the velocity? कि मैंने आंसर बता दिया इसलिए बता रहा हूँ। Good रेशमा नहीं शर्मा। सर, कैलकुलेट करने के बाद आई है velocity. Okay, good, सही है सही।
गुड रेशमा। शामिना भी आ गया मतलब टी स्क्वायर या गुड। सर एवरेज पावर टी है। या रेशमा गुड। शौकीन कुछ आया? सर नहीं हुआ। सर बस यही है टी स्क्वायर, वो भी जो आपने पहले थोड़ा समझना है। काइनेटिक एनर्जी अगर टी स्क्वायर आ गई तो वेलोसिटी लाने में क्या दिक्कत है? सर अभी करता हूँ मैं। जो भी मेरी क्लास में होश में बैठता है वो कर लेगा क्वेश्चन। सर वो होती ही रहती है, मुझे नहीं पता लोग ऑनलाइन होते हैं, मेरे को आंसर कैसे आ जाते हैं, कभी नहीं हो रहे। हाँ यही है। अब पावर निकाल लो। माय गॉश, प्लीज सी। सर वेलोसिटी √2/m²। अब जो भी आ रहा हो, I have to check the answers again and again. If you have got the kinetic energy, you can calculate the velocity. तो उसमें है क्या? Okay. Now please see. Power is given to us. Okay. What is power? Power is equal to work upon time. So power into time is equal to work. We have to calculate kinetic energy ना? And work will equal to kinetic energy. So अगर वर्क निकाल ले तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो वर्क कैसे निकालें? पावर इनटू टाइम, ठीक है। पावर इज वैरिंग विद टाइम, ओके। इफ पावर इज वैरिंग विद टाइम, सो लेट द टाइम बी, इसको जो है 2t चलिए अब इसको हटाइए। सो इफ वी कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस पावर, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं, अगर हम इंस्टेंटेनियस पावर कैलकुलेट करें तो p डॉट dt रखेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तब वर्क आएगा। ओके यस। ये मैंने आपको जब मैं काइनेमेटिक्स करवा रहा था उसमें बताया था कि जब आपको एक्सीलरेशन दे रखा हो, वेलोसिटी निकालना हो, तो एक्सीलरेशन का इंटीग्रेशन करिए। और डिफरेंशिएशन तब करना होता है जब वेलोसिटी दे रखी हो और एक्सीलरेशन निकालना हो। ये सब मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पे आपको पावर दे रखा था, वर्क निकालना था, तो आपको इंटीग्रेट करना था। वर्क दे रखा होता है, पावर निकालनी है, तो हम डिफरेंशिएट करते हैं। So power is 2t dot dt is equal to work done. इसका इंटीग्रेशन 2 will come out, integration of t will be t square upon 2 gone. So work done is equal to t square. Work done is kinetic energy. So kinetic energy comes out to be t square. क्या था इसमें? हमेशा याद रखिए, अगर स्ट्रेट प्रोसेस में जा रहे हो तो डिफरेंशिएशन होगा, पीछे आ रहे हो रिवर्स है तो इंटीग्रेशन होगा। ओके, अब तो इट्स चाइल्ड्स प्ले। वेलोसिटी, so kinetic energy is equal to what? Kinetic energy is half mv square. Yes or no? Yes sir. Kinetic energy you got as t square. So mv square upon 2 ऐसे लिख लीजिए। So 2t square upon m under root। दिशा वेरी गुड, तुम ही कर पाए यहाँ पे। यार ये तो आएगा। भाई मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन आप ही कर पाए यहाँ पे। गुड, ओके हो जाएगा, कोई नहीं, मिस हो जाता है कभी। अब पावर निकाल दो, कम से कम इतना तो करो। डू इट। पावर बताओ कितनी है? सब कुछ तो निकाल दिया मैंने, पावर निकालो। नेक्स्ट पार्ट 30। गुड।
सबको निकाला है। हाँ जी, वरांशी जी निकालिए। कैसे निकालेंगे पावर? ये क्या कर रही हो? मैं ये वाला कर रही थी ना। अब ये बात है, मैं आपको टाइम दूंगा लिखने के लिए, आप मुझे बताओ पावर कैसे आएगा। टोटल वर्क डन अपॉन में जो हमारा टाइम है जो वो वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पे कितना है टोटल वर्क डन? तो यहाँ पे टोटल वर्क डन तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी से निकालेंगे ना। कितना है? एक सेकंड में निकालते हैं। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क इज टी स्क्वायर। अच्छा हाँ टी स्क्वायर, सॉरी ध्यान दिया मैंने। So this is the power. Zoya, Kajal, Priyanka, Nikita. यस सर। Okay. Note it fast. Next heading. Law of conservation. First note it. Take 2 minutes. प्रोसेस कर क्या Law of conservation of mechanical energy. सर मैं क्यों बोलूँ? लाइक उस दिन आपने ना पोटेंशियल एनर्जी का चैलेंज दिया था कि मतलब नहीं पता होगा किसी को। मैंने अगले दिन मैं उसको पढ़ कर आई थी, मैंने कहा मैं बताऊंगी। तो आपने चैलेंज दे दिया करो ऐसे, बिकॉज फिर वो चीज़ ना मतलब वो थी कि करना है तो करना है, जैसे आपने डीपी बोली। Law of conservation of mechanical energy. First of all, what are mechanical energy? Mechanical energy. What is mechanical energy? Sir, kinetic energy, potential energy. Okay, yeah. What is mechanical energy? Yes, dear. What is potential mechanical and energy? kinetic energy. Do you know what is potential energy, Kajal? Don't hesitate in my class, okay? Whatever you want, you can say. I'm your mentor, okay? कुछ भी प्रॉब्लम हो, कितनी भी छोटी प्रॉब्लम हो, आप डिस्कस करिए और कभी हेसिटेट मत करिए। आपकी कोई प्रॉब्लम मैं बताता रहूँगा जब तक आप समझ नहीं जाओ, ठीक है? और गलत सही कोई भी आंसर आए बस दीजिए, लेकिन रिस्पॉन्ड करिए। बी एक्टिव इन दी क्लास, बस मैं इतना चाहता हूँ, बाकी क्या कर दूँ। Mechanical energy required to do any work like वो है ना तो potential। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से वर्क नहीं हो सकता, तो फिर डिफरेंस क्या है? कि एक्सटर्नल होती है क्या, मतलब एक्सटर्नल फोर्स जब लगाते तभी क्या एक्सटर्नल फोर्स। सही क्या है। अच्छा पॉइंट है। प्रियंका, व्हाट डू यू थिंक? Sum of potential and kinetic energy. क्या? Sum of potential and kinetic energy. सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, राइट डाउन। Suppose only conservative forces are acting on a system of particles. Only conservative forces are acting on a system of particles. Okay. एक कोई सिस्टम है जिसपे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रही हैं। Suppose only conservative forces are acting on a system of particles and potential energy U is defined. Potential energy U is defined corresponding to these forces. There are either no other forces. There are either no other forces or work done by them is zero. So क्या हो रहा है कि कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, कोई सिस्टम है
उसमें जो है पोटेंशियल एनर्जी लग रही है और बाकी और कोई भी फोर्स नहीं है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी वाला काम हो रहा है, बाकी कोई फोर्स नहीं है। और अगर है भी फोर्सेस तो उनके द्वारा किया गया वर्क डन जीरो है। किसी भी फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन जीरो है। वर्क डन बाय एनी अदर फोर्स इज जीरो और रेस्ट ऑफ द फोर्सेस आर एब्सेंट। ओके, सो इन सच अ केस व्हाट विल हैपन? इन सच अ केस जो भी वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज की वजह से ही हो रहा होगा। अगर कोई और फोर्स वर्क कर ही नहीं रही है, इफ नो अदर फोर्स इज डूइंग एनी अदर वर्क और सिस्टम में वर्क हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी की वजह से हो रहा है। राइट और रॉन्ग? सो uf minus ui will equal to minus w. Tell me yes or no? Yes sir. ठीक है। We also know that w is equal to kf minus ki. Yes sir. Change in kinetic energy, work energy theorem, है ना? So इसको उठा के मैं इसकी जगह रख सकता हूँ। Yes sir. So uf minus ui is equal to minus times kf minus ki. Kajal, this is work energy theorem. Work done is equal to change in kinetic energy. इसने फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किया है। और ये जो ऊपर है पोटेंशियल एनर्जी में जो आप चेंज देख रहे हैं डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस W, ये डेफिनेशन है पोटेंशियल एनर्जी। ओके, मैं करवा चुका हूँ ये सब। ठीक है, सॉल्व करिए। इससे आपको क्या मिलेगा बताइए बताइए। बड़ा सिंपल है। Sir, uf plus kf is equal to ui plus ki. या सो ये क्या लिखा हुआ है? ui is initial potential energy of a system, ki is the initial kinetic energy of a system, uf is the final potential energy, kf is the final kinetic energy। यानी कि initial kinetic energy of a system is equal to final kinetic energy, not only kinetic, initial energy of a system is equal to final energy of a system। Okay, and as you said that mechanical energies are kinetic and potential energies। Okay, so mechanical energy is conserved, it is not changing, mechanical energy is constant। सिस्टम में अगर आप ऐड करेंगे उसकी इनिशियल काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी और फिर बाद में उसकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी आप ऐड करेंगे तो उसका सम इक्वल आएगा। सिस्टम की एनर्जी सेम रहती है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर कैन इट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड। ओके, तो यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है। बॉडी जो है अपने आप को रूपांतरित body will change its energy, potential will get converted to kinetic, but still total energy will be constant। जब आप लोग छोटे से थे इतने बड़े से तब आप लोग एक चीज दिखाई गई होगी। तो देखो बच्चों, यहाँ पर एक बॉल है, some height, at some height, class 9। Yes sir. और इस बॉल को हम लोग ड्रॉप करेंगे। इस बॉल का मास m है। This height is h, remember or not? Yes sir. So initially Yes sir. I am holding the ball। तो अगर मैं बॉल को होल्ड करे हूँ तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी काजल? हाँ, जीरो होगी ऑब्वियसली। सो इस बॉल की अगर वेलोसिटी जीरो है तो इस पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? जीरो। सो इस इंस्टेंट पे, इस इंस्टेंट को हम लोग ए बोल देते हैं। एट इंस्टेंट ए बॉल के पास काइनेटिक एनर्जी जीरो है और दिस हाइट इज h, तो पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाएगी। बोलो यस और नो? Yes sir. ठीक है। सो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी इंस्टेंट a पे? टोटल एनर्जी विल बी mgh प्लस 0, दैट इज mgh, राइट? Yes sir.
अब चलिए बॉल जो है आगे चलेगी, यहाँ पर आएगी m, ओके लेट्स कॉल इट b। लेट्स से कि बॉल जब यहाँ से आ रही है तो इसकी वेलोसिटी v हो रही है, ठीक है। सो नाउ काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी हो जाएगी, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। और इसने हाइट आपकी मान लीजिए ट्रेवल कर ली है h डैश, ठीक है, h डैश ऊपर से, सो नीचे से h माइनस h डैश हो जाएगा। सो पोटेंशियल एनर्जी विल बी mg h माइनस h डैश, ठीक है, हाँ कि ना? ओके, नाउ टोटल एनर्जी एट इंस्टेंट b will be half mv square plus mg h minus h dash। फिर बॉल यहाँ पर आ जाएगी c पे, तो जब बॉल c पे आ गई तब क्या होगा, तब बॉल की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, हाइट 0 हो गई, सो पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम 0, काइनेटिक एनर्जी v से आई है तो हाफ mv स्क्वायर हो गई। तो आपको बताया जाता था कि इंस्टेंट a पे बॉडी के पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थी, ठीक है। जब बॉडी मूव करने लगी तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में, लेकिन टोटल एनर्जी अभी भी सेम रहेगी, यानी टोटल एनर्जी एट b ये ब्लू वाला पिंक वाले के इक्वल होगा, ठीक है। और जब बॉडी ने ग्राउंड को टच कर लिया तो उसकी सारी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक में। मैं उस एक इंस्टेंट की बात कर रहा हूँ, वो ग्राउंड को जस्ट टच करने वाली है, हाइट लगभग 0 हो गई है, तो उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, हाफ mv स्क्वायर हो जाएगी, है ना? ये टोटल एनर्जी होगी। यस और नो, डू यू रिमेंबर और नॉट? Yes, sir. So that's what was told to you and that's the proof of it. तो फिर मैकेनिकल एनर्जी क्या है मतलब? Mechanical energy is that energy, that form of energy। मैकेनिकल एनर्जी में दो चीजें आती, पहले तो ये समझिए फिर मैकेनिकल एनर्जी बताएं। मैकेनिकल एनर्जी में बॉडी की जो है इंटरनल एनर्जी को भी इंक्लूड करते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन एज द इंटरनल एनर्जी, ओके। एंड due to this internal energy, whatever the work body is going to do, if body is even going to move, तो वो इसी इंटरनल एनर्जी की वजह से ही मूव करेगी, ठीक है, राइट। सो कोई भी प्रोसेस को बॉडी में फोर्स लगाएं, वो वेलोसिटी गेन करे या एक्सीलरेशन गेन करे, वो ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि उस पे एनर्जी दी जा रही है। ये एनर्जी इंटरनल है, या बाहर से लग रही होगी तो फोर्स लग रही होगी, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी को आप पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं। अब ये जो इंटरनल एनर्जी, इसका कुछ पोर्शन कन्वर्ट होएगा, तभी तो बॉडी मूव करेगी किसी वेलोसिटी से, तो उसको आप काइनेटिक एनर्जी बोल देते हैं। तो ये डिफरेंट कैसे है इलेक्ट्रिकल से? इलेक्ट्रिकल में तो हम चार्जेस की वजह से एनर्जी की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिज्म में हम मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो एनर्जी एक्वायर्ड है उसकी बात कर रहे हैं। और इसमें बॉडी की इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल ही कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक में। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड ही नहीं है, क्योंकि किसी बॉडी के अंदर थोड़ी ना चले जाएंगे, राइट। नोट इट डाउन फास्ट। Okay, this is a case. Pay attention, everyone. I hope you all have done this. Done? Right? Who said no? Do it. Pay attention. This was for conservative forces. If the forces are non-conservative, तब क्या होगा? For non-conservative सर कभी अप्लाई नहीं होगा। Okay, यानी law of conservation of energy apply नहीं होगा। Now, if we talk about non-conservative forces, example of non-conservative forces, फ्रिक्शन,
So if I talk about non-conservative forces, let's say now the work is done by conservative, non-conservative and external force. सबसे वर्क हो रहा है. So now UF minus UI will be equal to minus times work done by conservative forces plus work done by non-conservative forces plus work done by external forces. Tell me yes or no. बोलो बोलो. Yes, sir. Right. Yes, sir. क्या ये मैंने सही Yes, sir. मैडम क्या ये मैंने सही लिखा है? Is it right? हाँ सही है सर फाइनल अरे this is wrong. I have told you in the definition of potential energy. For delta P, delta U is equal to work minus time work done by conservative forces. यहाँ पे मैं work done by non-conservative, work done by external सब ले रहा हूँ. तो ये कैसे हो जाएगा? मैं टाइम दे रहा हूँ, देख रहा हूँ, पूछ तक रहा हूँ कि सही लिखा है, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है. तो फिर ये किसके इक्वल होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से. वर्क एनर्जी थ्योरम तो अभी भी एप्लीकेबल होगी. वर्क एनर्जी थ्योरम तो सारी फोर्सेस ने जितना भी वर्क किया है सबका टोटल होता है. सो दिस विल बी इक्वल टू kf minus ki. ओके, तो फिर ये किसके इक्वल होगा? सो WC minus times WC is equal to UF minus UI. बोलो बोलो. Yes, sir. और यहाँ से माइनस साइन हट जाएगा. सबसे थोड़ी ना हट जाएगा हाँ वो वर्क एनर्जी थ्योरम है. वर्क एनर्जी थ्योरम में माइनस का होता है. नहीं तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव के लिए हटेगा ना बाकी के लिए जो वर्क एनर्जी थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस. तो माइनस तो था ही नहीं, वो तो मैंने लगाया था आप लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए. माइनस तो इसमें था. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, इसको इधर भेज दीजिए माइनस साइन को. वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करिए, बताइए क्या है. इसको उठाइए, यहाँ पे लगाइए इस वैल्यू को. डू इट. WNC प्लस W एक्सटर्नल की वैल्यू क्या आएगी? Sir, change in kinetic energy plus change in potential energy. Yes, sir. वही आ रहा है. या फिर ऐसे लिख लो. माइनस टोटल फाइनल एनर्जी माइनस टोटल इनिशियल एनर्जी, दैट इज kf plus uf minus ki plus ui. ये देखिए, kf minus ki is equal to uf minus ui plus WNC plus W external. इसको इधर ले जाएं. So kf minus uf plus ui minus ki, that's what you are saying, is equal to WNC plus W external. NC means non-conservative. Okay. और मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? मैं आपसे कह रहा हूँ ये, या फिर इसमें हम लोग एक काम और कर सकते हैं. अगर हम माइनस कॉमन ले लें, सर उधर से sin थीटा ui में माइनस आएगा. हाँ आपने माइनस यूएफ प्लस यूआई रख दिया उस साइड
वो हमने गलत रखा। ओके, और ये प्लस हो प्लस जाएगा, होगा। तो अब ये इधर जाके ऐड हो जाएगा और ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस फिर उसको माइनस बाहर ला के उसको वो करते हैं। एक मिनट में सॉल्व कर दे रहा हूँ। मैं तो डेढ़ ये हो जाएगा माइनस के आई माइनस यू आई, ऐसा हो गया। हाँ। ओके, के एफ प्लस यू एफ, ये तो सही। ठीक है, फिर इसका माइनस कॉमन लेके। ठीक है ना? हाँ सही है सर। ओके, सो ये देखिए, अब यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, so kf plus uf, take the minus common, minus times ki plus ui is equal to work done by non-conservative forces plus work done by external forces. What is this? This is total energy, final total energy. This is final इनिशियल एनर्जी। initial energy. हाँ। इनका डिफरेंस जो आएगा वो इक्वल होगा वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल। सो इसको आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, that work done by non-conservative plus work done by external is equal to EF minus EI या फिर डेल्टा E, change in energy of a system. Okay. So अगर यहाँ पे मैं आपसे पूछूं E क्या है, what is E? So E is the energy, right? You will say this. So E is K plus U, total mechanical energy, kinetic energy plus potential energy. Okay, note it fast. Then one question. So tomorrow we are going to start with UCM, uniform circular motion. Okay. Yes, sir. Thank you, sir. Okay, thanks a lot everyone. Once again, happy Children's Day. Bye bye. Take care. Have a great day. Enjoy. Thank you, sir.